Okay, so hi everyone. Now we're going to start the Constitution of the India, and we're going to continue with the provisions of the President and Vice President we have discussed in the last one. So coming to forward to the section to the articles of the President and the Vice President of the India, as we have understood under Article 52 of the Indian Constitution, we have understood that there must be a President of the India. इंडिया का एक प्रेसिडेंट रहना बहुत जरूरी है एंड द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द इंडिया। तो इंडिया का सुप्रीम अथॉरिटी एंड द प्रेसिडेंट उनके पास सारा चीज का लाइक ही इज द सेंट्रल बॉडी ऑफ द इंडिया, ही इज द हेड ऑफ द यूनियन, विदाउट हुज परमिशन नथिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड। गॉट इट? सो ऑल ओवर बोला जाए तो प्रेसिडेंट को हम मानते हैं द ही इज द supreme body, or he is the superior body of the union as well as the Indian Constitution. All right. So coming to the next part, when we have talked about the executive power of the president, we have already understood that the president is the supreme command of the defense forces of the India. And considering about the defense forces of the India, I have already made you understand there are basically three kinds of the defense forces over in India. That is the army, Navy, and Air Force. Okay. So when we're talking about this Army, Navy, or Air Force, we need to understand that President is the superior authority who is the head of the all three defense forces of the India. He is the head of the Army, he is the head of the Navy, and he is the head of the Air Force Authority of the India. Okay. So this is about the executive power of the President. एंड कमिंग टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जहां पे हमने ये मानते हैं कि व्हाट डज प्रेसिडेंट एक्चुअली डज। ओके, प्रेसिडेंट का एक्चुअल काम, लाइक ऑल वी नो दैट एज वी हैव अंडरस्टूड दैट देयर आर मेनी बॉडीज व्हिच हैज बीन बैलेंसिंग द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी एक्शंस। ओके, सो कमिंग टू द बिगनिंग पॉइंट, हमने ये बात भी डिस्कस किया था दैट देयर आर बेसिकली three bodies of the Indian Constitution. मतलब in this country, if you are talking about the governance, कि हमारा country को govern, then there are basically three major systems which are governing the Indian legal system or Indian governance system. What are those bodies? Those bodies are the Army, the Navy, and the Air Force. Okay. So considering that who is the supreme commander of these three forces, that is the army, that is the president of the India. And when we're talking about the legislative, executive, and judicial body of India, then we need to understand president is the basic head of the executive as well as the legislative body. तो चलिए समझते हैं what is executive, what is legislative, and what is judiciary. Legislative means the body which makes the legislation. जैसे कि मान लीजिए you are talking about the state council. In each state you have elected your MLA. Every state has the legislative assembly. Yes or no? So every state has the body which decides the legislation. जैसे कि you know what is the function of the legislative assembly of the state? They made certain kind of laws, certain kind of rules, certain kind of provisions which are beneficiary for the public welfare. Yes or no? This is the role of the state legislation. Coming to the center, what are the legislative body? The parliament, that means the Lok Sabha and Rajya Sabha, they are the legislative body. Yes or no? So when we're talking about this parliament, the Lok Sabha, Rajya Sabha, they are considered as the legislative body because they made the legislation. They made the provisions, the rules, the regulations which govern the Indian system. Okay. For example, आप मान लीजिए, it might be the Bharatiya Jan Sanhita, it might be the Indian Contract Act amendment, it might be the Indian Constitution itself. And आप मान लीजिए there are many kind of rule. अभी तो आपका भारतीय न्याय संहिता IPC CIPC एविडेंस का अमेंडमेंट हुआ है, right? And you are many kind of certain rules
जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया, आपका वर्क प्लेस में प्रोटेक्शन का वुमेन प्रोटेक्शन एट द वर्क प्लेस का एक्ट हो गया, आपका पोक्सो एक्ट हो गया. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द रूल्स, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द रेगुलेशंस, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द लेजिस्लेशन दे हैज बीन मेड फॉर द पब्लिक वेलफेयर. लोगों का बेनिफिट के लिए हमने वो सारे प्रोविजंस को बनाया है. And what is the body which has made the provisions? The body which has made the provisions, that is the legislation. That means that is the Parliament of India. The Parliament means the Parliament is consisting of the two bodies. That is the Lok Sabha and Rajya Sabha, right? So these two bodies of the India, they are considered as the legislature, and they make the provisions for the Indian system. They make the rules and regulation. They make the laws for the Indian citizens. Got it? So here we are talking about the legislature which makes the law. And then comes to the next part, which talks about the legislative and then executive. Executive means the body which puts the law, right? For example, जैसे कि आपका पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, द पार्लियामेंट मेक्स द लॉ, बट वो लॉ बनने के बाद वो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होना भी बहुत जरूरी है कि नहीं? यस और नो? टेल मी. लाइक द पार्लियामेंट द सेंटर मेड द लॉ. After the making of the law, there must be a body which is implementing the provisions, which is implementing the regulations. And what is the body which is implementing the regulation? That is the executive. एग्जीक्यूटिव में आपका क्या आता है? जैसे कि आपका मान लीजिए द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए, आईपीएस ऑफिसर हो गए, आईएएस हो गए, ओएएस हो गए, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया. जब कोई लॉ सेंटर पे या स्टेट लेजिस्लेशन में, देन इट हैज बीन असाइन्ड टू द अथॉरिटीज, to the respective authorities who are supposed to execute the law. वो लॉ को इम्प्लीमेंट होता है, एग्जीक्यूशन होता है, लोगों के लिए लागू होता है. दैट इज यूज्ड फॉर द पब्लिक बेनिफिट. दैट इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव. द बॉडी which executes the law is called the executive. The body who makes the law is called legislative. The body which executes the law is called executive. And then the most important part, that is the judiciary. So when we're talking about the judiciary, what do we understand by the judiciary? Judiciary is the body which decides the law. That means if there is any kind of conflict, if there is any kind of illegal activity during the implementation of the law, implementation of the provisions, in that case, if something is protecting the rights of the citizen, that is the judiciary system of India. Got it? So executive, legislative, and judiciary. I hope you have understood this. The legislative makes the law, executive implements the law, and judiciary is the system which legislative makes the law, executive implements the law, and judiciary is the system which prohibits from any kind of illegal occurrence. That means मान लीजिए कि there are certain kind of disputes. For example, मान लीजिए the state of Delhi. Delhi is making certain kind of provisions which is against the public benefit. आप ऐसे ही फार्मर्स एक्ट को ही ले, देयर आर द फार्मर्स एक्ट व्हिच हैज बीन इनेक्टेड, ओके, बट उसी को लेकर द फार्मर्स स्टार्टेड द हंगर स्ट्राइक. The farmers from all over the country, they came upon, they started striking. There were a huge dispute, but at the end क्या हुआ? The law has been repealed. Yes or no? Law repealed हुआ कि नहीं? क्यों हुआ? Because that was against the public benefit. When the court understand the nature of the act, तभी लगा कि नहीं, this is not going to continue. So when any kind of law or any kind of provisions which is against the public policy, which is against the rules or regulations of the social welfare, to prevent the law
which is going to harm the society, there is the safeguard system standing over at the top. That is the High Court and the Supreme Court and the judiciary system of India, जो कि इंडिया को सहारा देता है. The judiciary system of the India always protects the Indians from all kind of the disputes, all kind of things which is unauthentic or which is legally not beneficiary to the public. Clear? So यहाँ पे जब हम प्रेसिडेंशियल की बात करते हैं, प्रेसिडेंट क्या है? स्पेसिफिकली द एग्जीक्यूटिव बॉडी, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द अथॉरिटी ऑफ द एग्जीक्यूशन. कैसे? मैं बताती हूँ कैसे. मैंने आपको एग्जीक्यूटिव का बात इसीलिए समझाया क्योंकि आपको इस बात का समझ में आएगा जब मैं आपको बताऊंगी कि प्रेसिडेंट इज द हेड अथॉरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ द कंट्री. कैसे एग्जीक्यूटिव बन गए बताती हूँ. देखिए, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बिल which has been passed in the parliament. पार्लियामेंट पे किसी भी तरह का बिल पास हो जाता है, बट आफ्टर पासिंग ऑफ दैट बिल, वो बिल कैसे लॉ पे कन्वर्ट होता है? आफ्टर द साइन ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली दैट लॉ कन्वर्ट्स इनटू द बिल. तो यहाँ पे सुप्रीम अथॉरिटी कौन हो गए? प्रेसिडेंट हो गए. मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, बट अगर वो लॉ कोई बिल ले आया, राइट, बट वो बिल तब तक लॉ में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा जब तक वहां पे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं रहे. until and unless there is the signature of the president that is associated in it, associated in the bill is not converting into a law. हाँ कि नहीं? यस, समझ में आया? सो प्रेसिडेंट का साइन के बाद वो बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट बिकम्स implicable, that becomes applicable to the all over India, right? So when we're talking about these laws or regulations, right, so we must know that, okay, the president is the senior authority, the president is the supreme authority, the head नहीं है, उनके सिग्नेचर से ही सारा बिल लॉ बनता है एंड दैट बिकम्स इम्प्लीमेंटेड इन ऑल ओवर द इंडिया. सो यहाँ पे अगर मैं पूछूं हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी, द आंसर इज द प्रेसिडेंट, है ना. एंड प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द हेड ऑफ द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, the whole defense system of the country. Who is the head of this? The answer is the president. Clear? समझ में आया? Then coming to the part of Article 54, we have understood the election of the president, जहाँ पे मैंने आपको बताया था the members of the legislative assemblies of the state legislative assemblies like the Vidhan Sabha and Vidhan Parishad, right? As well as the members of the parliament, the Lok Sabha and Rajya Sabha, they jointly elect the president of the India. उन लोगों ने मिलके अगर, then that person is the president of the India. Clear? Just one second, guys. Sorry for the interruption. I've got a call. Okay. So the president has been elected by the members of the parliament, like the members of the Lok Sabha and Rajya Sabha, as well as the members of the state legislative assemblies. Okay, the state legislative assemblies means like the elected body of the state, or like who decides who is going to be the chief minister and all. You know, like in Odisha recently, the Mohan Maji, he became the chief minister of Odisha, and recently we have completed the election of the chief minister, right? So in the state there is the state legislative assembly, and in the center there are two bodies, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, House of the People and House of the States. Okay, so in these two bodies, two authorities, as well as the member of the state legislative assemblies, all they together elect the president of the India. Clear? Then coming to the terms of the office of the president, we have understood that the terms of the office of the president, that is usually 5 years in nature. Okay, यूजुअली प्रेसिडेंट का जो ड्यूरेशन होता है 5 साल का ही होता है ना. तो वहां पे देयर आर मोर टू थिंग्स वी हैव आल्सो स्टडीड, दैट प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है ना 5 साल, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता है कि प्रेसिडेंट इज गोइंग टू हिज होल टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द 5 years, राइट. ऐसा भी हो सकता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज ऑफिस प्रेसिडेंट आइदर खुद रिजाइन करते हैं
नहीं तो उनको थ्रू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। गॉट इट? सो अगर मतलब मान लीजिए कि एज वी हैव अंडरस्टूड इन द लास्ट क्लास कि अगर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 सॉरी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मान लीजिए द प्रेसिडेंट बिकेम्स इंसेंट, प्रेसिडेंट बिकेम बैंकरप्ट, भी तबीयत खराब हो जाता है या फिर ही गोस थ्रू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, एनी काइंड ऑफ द सर्कमस्टांसेस which is just not favorable in his condition and he is not capable to continue his office as the president of the India. So in that case, what he does, he resigns from his office. वो अपने ऑफिस से रेजिग्नेशन देते हैं, वो अपने ऑफिस छोड़ देते हैं, राइट? सो हियर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, 5 साल खत्म होने पहले अगर कभी भी प्रेसिडेंट ऐसा कोई सिचुएशन फेस करते हैं जहां पे उनको लगता है दैट ही इज नो मोर वर्दी टू कंटिन्यू हिज ऑफिस, in that case the president resigns from his office. Got it? And coming to the part of the uh, impeachment, हमने ये समझा था कि if the president is doing any kind of unauthentic or illegal activity which is not legal in nature, which is just very anonymous in nature, जो कि सही नहीं है, गलत है, एंड प्रेसिडेंट अगर इसी तरह का कोई भी काम, सो इन दैट केस द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू बी impeached by the member of the parliament as well as the member of the legislative bodies of the states. Okay, clear? तो यहाँ पे uh, हाँ, अंडर सेक्शन 50 sorry under section I'm so sorry, I'm again repeating section, this is actually article. Okay, in the IPC CIPC evidence we call it section, but in the constitution of India we call it articles. Okay, just don't make it mistake. This is a huge mistake I am doing here. I'm again telling section. This is article actually. Okay, actually when I'm teaching in the other classes, I was just before I was teaching you the जो IPC and contract and all these things. So वहां पे सेक्शन बोल बोल के इतना आदत कर भी रहे होते हैं ना, तो मेरे मुंह पे सेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है. सो पैडल मी फॉर दैट. ओके, सो कमिंग टू द पार्ट ऑफ द आर्टिकल 57 of the Indian Constitution, it speaks about the re-election. जहाँ पे हमने ये बात समझे थे, इट इज अबाउट द री-इलेक्शन. दैट मीन्स इफ मान लीजिए कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड कंसिडर कीजिए कि मैं दोबारा प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ, then it is allowed for me to stand or to fight again for the same position even if I am at the same position right now. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक बार प्रेसिडेंट बन गया, कि एक बार प्राइम मिनिस्टर, ये नहीं, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बन सकता. बिल्कुल, बिकॉज दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको एक बार क्यों 100 बार जिताओ, क्या दिक्कत है भाई? जैसे कि मान लीजिए यू मस्ट हैव सीन सर्टेन काइंड ऑफ एमपीज एंड एमएलएस, दे इलेक्टेड एज द सेम एमपी और एमएलए 5 टाइम 6 टाइम 10 टाइम 7 टाइम, 7 बार 8 बार. मतलब आप सोचिए देयर इज एन एमपी ओवर हियर इन ओडिशा जो कि 7 बार या 8 बार मतलब पार्लियामेंट को जा चुके हैं. कैन यू इमेजिन? 7 into 5, 35 years. That person is just continuing as the MP or MLA or the same designation. Why? Because if someone is doing any kind of good activity, अगर किसी ने अच्छा काम कर रहा है, तो what is the consequence? Obviously लोग चाहते हैं कि वही इंसान हमारा लीडर बन के रहे. आप मोदी जी के बाद देख लीजिए, लाइक मोदी जी became the prime minister in 2014. Again he became the prime minister in 2019 and again he became the prime minister in 2023. तो यहाँ पे भी तो वही चीज हुआ ना. वो एक बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, ऐसा नहीं कि उनका प्राइम मिनिस्टर एक बार बन गए और खत्म हो गया, नहीं. वो बार बार बनते रहे एंड अभी भी इससे ईयर इलेक्शन के बाद भी वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बने हैं. तो अबाउट दिस री इलेक्शन प्रोविजन अंडर आर्टिकल 57, इट स्पीक्स अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ द री इलेक्शन, जहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर आप एक बार कोई पोजिशन पे आ जाते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ you are elected as the president of the India once, it does not mean that you cannot stand for the same position again or you cannot become the president again. आप फिर से भी लड़ सकते हो, फिर से भी आप इलेक्ट हो सकते हो एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, बट मैंडेटरी है कि आपको जितना जरूरी है. ऐसा नहीं कि मैं पहले भी प्रेसिडेंट था और इस बार भी मैं ऑटोमेटिकली बैठ जाऊंगी सिर पे, नहीं. उसका जो इलेक्शन का प्रोसीजर होता है ना प्रेसिडेंट का,
आप उसी में पार्टिसिपेट करो। अगर आपको उसी में सही सलामत 2/3 ऑफ द वोट मिल जाता है फ्रॉम ऑल द हाउसेस एंड फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर आज हुए, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो एज द प्रेसिडेंट, देन ठीक है, यू आर गोइंग टू कंटिन्यू द ऑफिस, यू आर गोइंग टू बी री-इलेक्टेड, है ना? So this is it. So coming to the point of the qualification of the election of the president, हमने ये इस बारे में डिस्कस किया था that there must be three qualities which need to be fulfilled to become a president. First, the person who is getting elected as the president, that person must be the citizen of the India. वो इंडिया का बाहर का आदमी नहीं होना चाहिए. दैट पर्सन मस्ट बी द सिटीजन ऑफ द इंडिया. द सेकेंड थिंग, दैट पर्सन मस्ट बी मिनिमम 35 years ऑफ द ओल्ड. उसका उम्र मिनिमम 35. एंड तीसरा, दैट पर्सन मस्ट क्वालिफाई to to fulfill all the conditions to be elected as the member of the parliament. तो हमने इस बात भी डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है वो इंसान, the person who is getting मतलब elected as the president, who is competing for the presidential election, need to be the member of the parliament. नहीं, वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होना जरूरी नहीं है, बट पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए जो क्राइटेरिया, वो सारा क्राइटेरिया वो फुलफिल करना बहुत जरूरी है. क्लियर? नेक्स्ट, देन आते हैं कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस. इट स्पीक्स दैट the president shall not be a member of the either house of the parliament or the house of the legislature of the state. The second thing, the president shall not hold any other office of profit. The president shall be entitled without payment of raise for use of his official residences, emoluments or official allowances, privileges. And the last point, the emolument and allowances of president shall not be diminished during his terms of the office. Okay? तो ये चार पॉइंट को हमने अभी समझते हैं. आर्टिकल 59, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन. हमने क्या पढ़ा? प्रेसिडेंट का इलेक्ट कौन करते हैं? द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन एंड द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. तो मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन, as you have understood, they elect the president of the India. है कि नहीं? But इसका मतलब, but अगर if there is a person who is the member of the parliament, for example, there is a person who is the member of the, right? That person is competent to stand for the designation of the president. That person is competent. But if that person wins the presidential election, he or she need to leave his previous designation when he gets the new one. Obvious बात है भाई, अगर कोई प्रेसिडेंट बन जाता है, क्या वो एज एन एमपी कंटिन्यू करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं. मान लीजिए आई हैव बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. मैंने लोकसभा में मेरे को एमपी कहे, बट अगेन आई कॉम्पिटेड फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मैंने वो इलेक्शन विन भी कर लिया. एंड आफ्टर विनिंग द डेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, मेरे को मेरा प्रीवियस पोजीशन छोड़ना पड़ेगा. दैट मीन्स at the point I was continuing as the member of the parliament, I should leave that designation before I had. मेरे को वो डेजिग्नेशन छोड़ना बहुत जरूरी होता है. एंड अगर कोई प्रेसिडेंट बन जाता है कि उसके लिए कोई लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, एमएलए हो गया, एमपी हो गया, डेजिग्नेशन क्या ही मायने रखेगा? वो प्रेसिडेंट बन रहा है भाई. तो ये सब डेजिग्नेशन छोड़ना तो बहुत जेन्युइन बात होता है ना? दूसरा क्या है? द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट. उनका खुद का कोई ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट नहीं रहना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई एम द ओनर ऑफ द 3 कंपनीज. मेरे पास बहुत सारा पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, 3 कंपनी है ना? एंड आई एम कॉम्पिटिंग फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. कैन आई? द आंसर इज नो. अगर मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विन कर जाती हूँ, देन आई हैव टू लीव माय ओनरशिप ऑफ द कंपनीज, क्योंकि मैं प्रेसिडेंशियल डेजिग्नेशन पे रहते हुए ऐसा कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कैरी नहीं कर सकती. एंड दिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कैन बी वेरियस इन नेचर. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का हमेशा मतलब नहीं होता है कि बिजनेस है या फिर बहुत सारा पैसा है, कोई कंपनी का मालिक है, ऐसा नहीं है. इफ दैट पर्सन इज, फॉर एग्जाम्पल, दैट पर्सन इज वर्किंग एज द सिविल सर्वेंट, like that person is working as the Indian Administrative Service Officer,
that person is working any kind of the government employee or any kind of the government designation that person is working, जहाँ पे उसको कोई भी profit मिल रहा है, that that designation should be quit if the person is elected as the president of the India. Clear? Then the president shall be entitled without payment the rent of the use of his official residence. मतलब राजभवन होता है ना, you must know the राष्ट्रपति भवन. So the राष्ट्रपति भवन is told as the resident of the president of the India. मतलब for example the person who is elected as the president of the India वो 5 साल के लिए राष्ट्रपति भवन पे ही रहे. Okay. So when there is a person who is a president of the India, he's seated to the राष्ट्रपति भवन, क्या उनको राष्ट्र देना पड़ता है? Of course नहीं, because अगर वो एक कंट्री का राजा है, कंट्री का किंग है, कंट्री का सुपेरियर अथॉरिटी है, तो उनको किस चीज का पैसा देना? सो यहाँ पे वही बात बोला जाता है, द प्रेसिडेंट शैल बी एंटाइटेड विदाउट द पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस. ऑफिशियल रेसिडेंट मतलब द प्रेसिडेंट इज रिसाइडिंग एट द राष्ट्रपति भवन, बट उसी के लिए ही इज नॉट एंटाइटेड टू पे एनीथिंग. का पेमेंट करना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, एंड विदाउट पेइंग एनीथिंग द प्रेसिडेंट इज स्टेइंग एट द राष्ट्रपति भवन एंड एंटाइटेड टू गेट all kinds of benefits which is available to the president of the India. उनके पास जितना सारा सर्विस होना चाहिए, जितना सिक्योरिटी होना चाहिए, जितना खाना पीना का व्यवस्था होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल देयर आर द three state security system. Army, Navy, SS, वहाँ पे security. There are also the cooks who make food. There are the people who take care of the president. And बहुत सारे सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध होता है. So the president who is seated to Rashtrapati Bhavan to stay there, that person is going to get all kinds of the benefits of his official residence, जहाँ पे वो रह रहे हैं, जहाँ पे वो इलेक्ट होके रहने गए हैं, and that should be without cost. उनको उसी के लिए किसी भी पैसा देने का कोई भी जरूरत नहीं होता है. Okay, then the emolument and allowances of the president shall not be diminished during his terms of the office. President का जो सैलरी होता है ना, तो वो उनके during his terms of the office 5 साल के ड्यूरेशन पे उनको अपना सैलरी, उनका अलाउंसेस मंथली सही सलामत मिलना बहुत, and the president should always get his emoluments and allowances for his term of his office. Clear? Then Article 60 of the Indian Constitution, it speaks about the oath and affirmation by the president. And what the oath is exactly about, it speaks that I, AB, मतलब जो भी आपका नाम है, XY, do swear in the name of the God that I will fully execute the office of the President of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and law, and that I will devote myself and service and the well-being of the. So this is the very simple oath the president take before taking the charge of his office. तो थोड़ा सा इस ओथ को थोड़ा सा समझते हैं. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, इसलिए आपको समझा रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के. मतलब पहले क्या करता है, स्वेयर इन द नेम ऑफ द गॉड, भगवान के नाम पे मैं शपथ लेती हूँ, या सब क्या शपथ लेती, आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया. मैं विश्वास और भरोसा के साथ एग्जीक्यूट व्हाट, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, I am going to hold it. I am going to continue it with transparency and trust. मैं किसी भी तरह का गड़बड़ नहीं करूंगी, मैं भरोसे के साथ, बिलीव के साथ ये काम संपन्न करूंगी. ये होता है पहला चीज. दूसरा क्या बोलता है, and will do the best of my ability to preserve, protect and defend the constitution. ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पहला प्रायोरिटी है. प्रेसिडेंट भी अपने ओथ पे बोलते हैं दैट आई हियर बाय टेक माय ओथ टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या क्या बोलते हैं, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड. प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रिजर्व मतलब टू मेक इट सेफ, प्रोटेक्ट एंड सिक्योर आ रहा है,
दैट मीन्स द प्रेसिडेंट शुड बी ऑलवेज कंसर्न दैट कुछ भी हो जाए बट कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई भी आंच आना नहीं चाहिए. क्या एंड आई विल डिवोट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग फॉर द पीपल ऑफ द इंडिया. प्रेसिडेंट यहाँ पे ओथ लेते हैं दैट आई एम डिवोटिंग माई सेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग फॉर द पीपल ऑफ द इंडिया. मैंने ऐसा अपने काम ड्यूरिंग माई वर्किंग पीरियड आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग which will be against the public policy or which will going to hamper the public benefit itself. तो मेरा मेरा हर कोई काम लोगों के लिए. As like the Abraham Lincoln said, we must know democracy is for the people and by the people. गणतंत्र जो है डेमोक्रेसी है दैट इज ऑफ द पीपुल, लोगों फॉर द पीपुल, लोगों के लिए है, एंड बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा है. दिस इज वेरी सिंपल थिंग. लाइक प्रेसिडेंट को कौन कौन चुनते हैं? द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. उनको कौन चुनते हैं? हम चुनते हैं. तो इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट हमारे द्वारा ही चुनाया जाता है, राइट? सो हियर यहाँ पे जो डेमोक्रेसी का बात किया जाता है ना, ऑफ द पीपुल, लोगों के द्वारा डेमोक्रेसी बताया. फॉर द पीपुल, डेमोक्रेसी किसके लिए है? लोगों के लिए है. एंड बाय द पीपुल, डेमोक्रेटिक इलेक्शन का प्रोसीजर होता है ना, वहां पे वोटिंग कौन करते हैं? जनसाधारण करते हैं. लोग वोट देते हैं. दे चूज देयर ओन सीनियर, दे चूज देयर सीनियर अथॉरिटी, है ना? सो यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का पहला ड्यूटी रहता है टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपुल, टू प्रोटेक्ट द वेल बीइंग ऑफ द पीपुल इटसेल्फ. क्लियर? देन आता है आपका आर्टिकल 61 which speaks about the impeachment procedure of the president, which we are going to study in the next class, that means tomorrow.